start. This was the drawing I was showing on the river side. Into the river side, we were laying two layers, and nearer to the banks, we were laying only one single, and very close to the bank, we were laying bamboo porcupines and deep trees. That was the design. This was a type of how we demarcate the reaches. One is the length and the capacity of our departmental persons, and we also identify certain positions. For example, we start from this point. We have certain persons like work assistants or helpers who do not know the full skill. For example, those persons do not know how to identify this point. We cannot instruct them to place their points by GPS. They do not know those points. So we only instruct them that go to that point, this point. They know by the name that point. So when we say that this is up to this reach, probably there are houses or certain points. So we leave it like this. And when we demarcate for a single year, for example, in 2023, we have demarcated this as reach 1. The next year, if the design is the same, for example, in 2024, the design was the same. So we demarcated the same by Google Earth, by using Google Earth photos. And the same reach has been just only the working length has been changed, and others remaining the same. These are the pictures of certain the RCC blocks. The casting of these are also casted those points. That was the school. This is the during binding of the reinforcements. Only nominal reinforcement. And this is the tying the tying the rope of the last porcupine with the blocks. ব্লক কত রে Rope 6 mm. কই কোন দিকে লেখা আছে রে 6 mm steel wire. ব্লক তার প্রত্যেকটা করতে হবে এরকম করে হ্যাঁ ভাই Porcupine का साइज porcupine का तो वही सेम साइज है जैसा 3 meter length, each member 3 meter length, and 100 meter 100 mm by 100 mm, that is the cross section. How do you ensure that in this place 2 layers laid or 3 layers laid? How do you ensure? We ensure like this. For example, we have a point. This is the point. This is the block number 30, as is marked here. So we our personnel are making a registers like block 30. Block 13 के सामने 10 block 10 porcupine lay करना. So in 2 days or 3 days they are dumping those porcupines, and everybody is keeping the records that which day they are dumping how much in front of those lines. For example, probably there are 4 boards flying in that same reach. So when it is not that they complete one by one and by one. One board is probably in charge of at least 6 to 7 blocks.
because that is the space needed for flying of that boat. Simultaneously, three boats are dumping porcupines. So you have to give at least 30-40 meters flying area to one boat. So probably since there are around 3 meters, 4 meters central distance between each block, so it takes around 6 to 7 blocks for one boat. So once the one line has been completed, as per our records, we and that is being completed for almost 30-40 meter length along the bank. Then we go in for the second layer. Second layer as per design, that is what we have received from the CWC, that last five porcupines have to be dumped in the second layer. That only we have dumping here as second layer. My question is, And one thing another, in our estimates, when during preparation of the estimates, we have got a design. But what we do during the estimates, we have the bed profile. So as per our bed profile, we are proposing, we are modifying that this many have to be done in this ridge. We know that particulars of that ridge, whether that is very steep or that slope is gentle. If the slope is gentle, we go in for single layer. Even if that proposal has probably given for second layer, we do not go for second layer. But that will be the wastage of the material. We can dump it some other places. बेसिकली हमको जो ड्राइंग आई है सीडब्ल्यूसी से एग्जैक्टली उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है ड्राइंग में नोट लिखा भी होता है उसमें द स्लेइंग एंड जंपिंग ऑफ एज पर एक्चुअल साइड कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं तो और आपका जो क्वेश्चन है वो ये है उसमें ये होता है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे कितने डाउन करें उसका रजिस्टर मेंटेन करें एक्स मींस रीच की लेंथ फ्रॉम द बैराज साइड दैट इज द चेनेज एंड वाई मींस आपका जो बैंक से कितना दूर है तो चार्ट मेंटेन होता है ना उस चार्ट में पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर पे एक लेयर डली दो लेयर एंड उसकी डेप्थ कितनी है वो हमको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर डेप्थ पे हमको मान लीजिए दो लेयर डालनी है एक लेयर डालनी है अकॉर्डिंगली वहां पे एक या दो लेयर ही डालनी है actually design is certainly empirical. They give you only two types of design where siltation has been observed, and that also according to our proposal we gave in that please send us two types of design where sedimentation has been observed, where sedimentation has not been observed. So we identify those reaches, and as per our hydrological survey drawings, not for as per I estimation. मतलब इसमें सर हम लोग जो एस्टिमेट बनाता है वो एस्टिमेट में डिटेल्स है, जो उसमें बेड प्रोफाइल में कितना डेप्थ है वो सारी डिटेल्स उसमें है जो वेट वी प्रोपोजिंग इन द एस्टिमेट्स. बड़े सर नहीं हमको फील्ड में ये क्वेश्चन किया था सर कि यहाँ पे दो लेयर या तीन लेयर ले करना है तो एक ऑफिसर ने बोलते हैं सर कि यह एक लेयर कंप्लीट करो 5 रोज या 6 रोज 3 रोज 4 रोज इतना करो ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड लेयर शुरू करो. लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं बता रहा हूँ वाटर लेवल नहीं करता है. एक लेयर हम ले कर दिया फिर उसके ऊपर सब बहुत प्लाई नहीं करते हैं सर. वो टकरा जाती है प्लाई करने नहीं, हम लोग का उधर बोट नहीं टकरा जाएगा क्योंकि वो बहुत डीप चैनल्स है. आपका वो एक में कितना आएगा 3 मीटर आएगा, 3 में आपका 6 मीटर, 3 में 9 मीटर आएगा. हम लोग का तो 2 लेयर है 6 मीटर्स, बट दैट चैनल इज मोर देन 15 मीटर्स ऑल्सो. ए बोट का कितना ड्राफ्ट होगा? बोट तो 1-2 मीटर भी नहीं आएगा. 15 मीटर्स डेप्थ में तो हम लोग यही तो डिजाइन मिला है. we cannot say of स्क्रीन को 15 मीटर डेप्थ या मतलब ज्यादा डेप्थ में तो रिकमेंडेड नहीं है. नहीं वो हमको जो डिजाइन मिलता है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं. that design is not proposed from ABP. that design comes from CWC. यही तो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मतलब जहां डेप्थ है तो आराम से बार्ज हो या बोट हो कर सकते हैं लेकिन एक लेयर हमने ले कर दिया उसके बाद हम ट्रैक कैसे करेंगे कि क्या सेकंड लेयर बनना है. नहीं, what we are doing is this from practical point of view.
we are supposed to tie the porcupines. So if we have tied that first layer with the block, then how am I to lay the second one? So we do not tie even the lower layer with the porcupine. We only tie the top layer. If you some tell that I have tied all these porcupines with the blocks, it is not possible. It will be like ivory staying in ivory tower. It cannot be done. Practically in those reaches it's impossible. If I say that I have tied all those porcupines with the blocks, somebody is telling a lie. As per our practical suggestion, it is impossible. Because if you get the chance to visit those sites, you will understand it is impossible. You can only tie it, and that tying is also not really necessary. It is time. Probably they are saying that it will stay in that. It will stay in the erect position. When you are giving, you are dumping that in probably 10 meters, 15 meters position, and that is a steep slope. It is probably sliding down. For example, I am dumping it at 30 meters. It is going to around 50 meters. It will go to 15 meters. So we generally what we do, we dump it at least 5 to 10 meters before. Then it can go there. Even if probably that is also going there, we do not know if it goes. We only see by the results achieved after the flood season is over. When we receive the results, results are visible before the eyes. Then only we say that that is successful. और एक सर मतलब क्वेश्चन नहीं है, एक डाउट है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि थ्योरी में हम एस्टिमेट करते हैं यह बाहर का तो 3 मीटर है, लेकिन रिजल्टेंट हाइट तो हम 3 मीटर नहीं मीटर है, तो 5 मीटर मैक्सिमम मीटर है। फिर वह सीन में अगर ये हो सकता है तब तो 2 मीटर ही मिलता है। लेकिन जब थ्योरी में हम एस्टिमेट करते हैं 5 मीटर डेप्थ है, मतलब 2 लेयर, लेकिन एक पोर्कूपाइन के ऊपर और एक पोर्कूपाइन करने से हम 2 मीटर 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं मिलते। That is a practical. We know that. Or not only that, probably some porcupines are also getting broken because they are slender sections. ये मतलब बोलना चाहिए कि नहीं सही पता नहीं, बहुत सा बड़ा इंजीनियर को ये आइडिया नहीं रहती है। एक बार देखिए आप अल्टीमेटली सेडिमेंटेशन हो रहा है ना, मतलब काम ठीक किया है। हाँ, देखना है सेडिमेंटेशन हुआ है मतलब हमारे किसने काम सही किया। ये बात, क्योंकि देखिए पानी के अंदर वो जा रहा है, जब पानी के नीचे जा रहा है, वो पानी के नीचे जब फ्लोट कर रहा है तभी वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और ऐसा पॉर्क्यूपाइन 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर नहीं हो सकता, अंदर चला जा सकता है ना, उलझ सकता है, टूट भी सकता है। दोनों actually होगा तो मतलब काम से actually results are achieved by a mix of the various types of materials. For example, not only RCC porcupines, we are using bamboo porcupines, and bamboo porcupines are laid along the they are using they are used as a shield and also as a screen. Within the bamboo frame, middle frame, central frame, there is also a mesh, and then within the mesh there are boulders. So there are small voids, and when those voids get filled up with the mud or silt, so it acts as a wall. First of all, when we dump it, it is a permeable thing, but after the flood season, it is almost an impermeable type of thing. Thank you. These were the casting, shuttering and framework of the RCC porcupines during casting, during dumping, and before dumping. They stored it like this, and in the middle they erect those at 2 porcupines. There is space for 2 porcupines. This type of boats are available locally. Maximum. They make a platform, bamboo platform, and over it, though they stored the members on both sides, and they erect a maximum of 2.
These are the bamboo porcupines. Bamboo porcupines are 2 meters in length and 2 meters in breadth also. And the central part, this is the part where we dump those boulders. This is 2 feet, 0.6 cubical. बोल्डर्स पे डाला पड़ता है कि बाबू तो फ्लोट करता है हाँ वो फ्लोट करेगी बोल्डर से लेके होते हैं नीचे चला जाता है और ये जब नीचे जाता है ना तो नीचे जो स्लिट है सेकंड में जो जाके गड़ जाता है तो ये आगे फ्लोट नहीं There are actually two options, either by depositing, dumping boulders, and other by dumping bricks. So bricks are, I think, they, not much good quality is available locally. हाथ बोल्डर डाल तो नीचे चला चला बीच में This central portion, I am showing it. कुछ है नीचे है हाँ, सर ये जो ये जो सेंट्रल पोर्शन में केज डाल दिया, केज के अंदर वो डालने के बाद ये ऊपर में एक स्क्रीन है, लेयर है, मेश है, वो मेश को बंद कर देते हैं by pins. There are two types of pins. One is around 300 mm length, and that is the 450 mm. एक का यूजर कॉस्ट कितना होगा Cost around 500 रुपए नहीं 2000 something होगा, 2000 something, 2000 to 3000. ये प्रैक्टिस इधर भी है क्या नहीं ऐसे बंबू प्लस अलग तरह से करते हैं सर वो अलग तरह से बंबू को अलग करके करते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होगा Actually, RCC porcupines were first introduced when persons of Brahmaputra board got deputed to APP in 2006. That model was introduced the first time in 2006, but that was not implemented that much. It got implemented only from 2012-13. But at that time, boulder was widely available, so boulder works were carried out. But now boulder is scarcity. एक बोल्डर में एक इशू और भी आता है वहाँ पे सैंड थोड़ी ना बड़ी ऐसी टाइप की मतलब ऑयल टाइप होती है बोल्डर डालते हैं ना तो अंदर चले जाते हैं इसमें इफेक्टिव नहीं होती या तो बोल्डर को केज में डालो ना केज में हम लोग डालते थे केज में डालते लेकिन फिर भी बोल्डर अंदर चले जाता तो अभी क्या है बोल्डर की स्कैर्सिटी हो गई ये ज़्यादा इफेक्टिव है After laying those along the banks, it looks like this. लेकिन डाउनस्ट्रीम राइट बैंक में जो काम हुआ है बोल्डर पिचिंग काम का बहुत अच्छा है पास्ट में जो बोल्डर पिचिंग काम के उनके रिजल्ट भी अच्छा है बोल्डर पिचिंग से इफेक्टिव है Boulder pitching, and we also used to carry out boulder armoring of the river bed. That was done till 2012-13. I have certain actually some optical photos with me because at that time there were no digital, so I can show you personally. I cannot add in slide something. So they have laid this by manually placing there, and they are now filling the boulders there. And either two ways we can do this: either by placing it like this, or by dumping from boats, as per the site conditions. Because boats cannot come nearer to this point, so we did this by manually. কি আবার কালকে আসুন কেন ও আচ্ছা They are dead very fast because bamboo is widely available. डैम भी कहाँ हुआ आशे वाला जो लाव लिया है And it acts as a screen. कॉस्ट का सब कितना ये होगा Cost में और RCC porcupine का cost ज़्यादा है. ये this is around almost 50%. 50%. लाइफ तो ये बहुत लाइफ कम है, इनका लाइफ कम है यार. we can dump this only during high floods. लो फ्लड में डंप करेगा तो वो ऊपर में रह जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा. बैम्बू विल ड्राई अंडर द सन, so it has to be dumped under water. But some people is better to use RCC product. हाँ, we have to use mix of both.
बहुत अच्छा, अभी तो हम लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लाइफ वही आपका 2 महीने 3 महीने का, कि 2 महीने में ही तो हम लोग का वो सिल्टेशन अचीव हो जाता है। उसके बाद उसका कुछ फायदा नहीं है। जैसा वो ये रोप हम लोग जो यूज किया है टाइम का, तो लोकल लोग भी कभी कभी ना रोप को काट देता है, क्योंकि वो उनका जो लोकल फिशिंग बोट्स को अंदर लेने के लिए, किंतु वो हम लोग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड हो गया। वो पोर्कुपाइन उधर ऑलरेडी स्टैंडिंग है, एंड वो सिल्टेशन अचीव हो गया। तो उसके बाद वो उतना महंगा भी नहीं है, वो काट दिया तो उसका क्या है, हम लोग का तो मेन सिल्टेशन तो अचीव हो गया। These are certain cement bags dumping. This year we have used certain HDP bags. These are HDP bags. HDP bags. And you have put In cages, in nylon cages. nylon crates. हाँ, we- nylon crates are 1 meter. They are tiny thread type. 1 meter by 1 meter by 1 meter, and we place the bags in them. हाँ, फंस के उधर के डंप कर देते। Where the boats cannot come, the people, the laborers place them locally like this. In 2023, uh, 2023, this was the school. This was the school which was attacked in 21. Yes. So we laid the at that time there was heavy depth all throughout this. So we laid the cement bags all along the bank. But later on, siltation was achieved in 2022 only. So in 23, there was a provision of laying again the bags like this. But I was in charge of this side and other adjoining sides also. And I found out that instead of going through this, I can easily make up the same quantity of almost the same quantity by laying a dwarf embankment like this. Almost the same. I made a on-site hydrological survey 3 days, and I found that that can be achieved. And in front of this, instead of going there, I dumped those RCC bamboo porcupines in layers here, and RCC porcupines in front of this. Due to this, uh, huge siltation was observed in 23 itself, and in 24, since we had progressed like up to this, the whole area has got to this. I'll show you the pictures. तो लेयर बाय लेयर करके तो 15 साल में होता, पूरा मार्क करना पड़ता, ये एक बार पूरा सेपरेशन। This is the I will get on to that. This is the we are dumping of the cages from the boats. Same is with the cement bags. But this is टाइट करे बाद भी get this as fresh bags. Cement bags are actually second hand bags. This is the siltation we have observed in 2 years. Huh. This was a part of a mosque, which see the building was almost leading, but now this has gone that far. And these blocks we have laid in 23 and 24 they are gone back.
The back side also has got, this was also swampy type land. This has all been almost silted. I think probably in this is a earlier picture in October, possibly in November. Yeah, October. हाँ, नवंबर सिल्टेशन और भी ज़्यादा हुआ है. This is after the water level has gone down. This is the उस तरफ से ये सब उसमें वही बिल्डिंग है जहाँ तक 21 तक चला गया था. अभी यहाँ तक हम लोग वो जो ड्वार्फ एम्बैंकमेंट बनाया था, यहाँ ड्वार्फ एम्बैंकमेंट बनाया था. पूरा ये हम लोग उसी टाइम जो डांप किया था, अभी ये पूरा सिल्टेशन होने का बाद देखिए ये सब पूरा अंदर में अभी what has been done, you can see that practically. This length is more than 90 meters in this side, and this is also around same 90 meters से ज़्यादा 100 meters हो जाएगा 100 meters. Yeah, another area, this type of siltation. What we have done is in 23 itself we observed various areas which were of the formation of like a D type. Actually, when erosion occurs, it occurs in a slip circle type, either in tanks or in beds. So, if we can close this type of Ds by formation of the bamboo screens or RCC screens, so we can achieve this type of reclamation of land. This is that is later picture which we have shown earlier. This is during October, November, December. Now I am showing you certain works of the downstream portion, downstream of barrage, which we did carry out in 2016. There was a need for a drainage channel. And this was excavated. Drainage channel was coming from the inner land, and this is the downstream of Ganga, and there are 2-3 channels inside. This was at that time a live channel, and erosion was also occurring here. However, drainage was also needed to be poured into the Ganga. This was during construction. At that time, there was a need for toe wall, so they were laying the toe walls in. The length was the cage's length was 5 meters and 1.8 meter height, 6 meters in height, sausage type. In cages you used Boulders. no GI cages. GI cages or PVC coated GI. No, PVC good ना GI. Still GI. 4 mm. हाँ 4 mm. उसका आगे भी हम लोग और भी 4 mm और उसका लेटर हम लोग 3.75 mm भी यूज किया है. This is the tarja mat and that is the geotextile. Now I am showing you this is how we tie this tie this on the land, and they the geotextiles actually come in 5 meters 5 meters width. So and when we float like this 2 to 3 tarja mats are tied to the board on that side, and on the land also 2 to 3 ropes are here tied, and on that either boulders or decks are dumped as weight. These are used to protect the river bed. This we have achieved in blocking of the channels. Blocking of the channels. With channel, this we have carried out in May. Since this is downstream of the barrage, the flow is regulated.
Downstream in May, water level is around 48 feet, whereas the upstream pond level is around 72 feet. So in upstream side, that pond level is maintained always. So we cannot carry out this type of works in the upstream. But in downstream side, when the river level, water level is very low, we can easily carry out placing of the porcupines. If we carry out the works early, from February to May, we can carry out this type of works. And this channel with the active channel has been blocked. You can see this is the porcupine here as a screen. This was what I was talking as the drainage channel. Again, the porcupines were also used at that time, bamboo porcupines. This is the drainage channel, formation of the drainage channel. Short embankment type. Downstream side तो embankment ज़्यादा height नहीं होता. These are the works carried out now on the downstream right bank. Downstream right bank, and the extreme erosion is being observed over the past 2 to 3 years. Porcupines, boulders. And siltation has been also been observed downstream. This is 24. 23 maybe. 23 के siltation हुआ है. This is the feeder canal. There are feeder canal में बहुत सारी जगह में बैंक स्लिप होता है. तो बैंक स्लिप में सर तो खुद सर का अंदर में बहुत सारे काम हो सकता है. ये इसी में जियो टेक्सटाइल नहीं किया है. इसके ऊपर ये होगा एचटीपी बैग्स फिल कर दिया. बहुत इफेक्टिवली. नीचे सर नीचे आपका शाल वाला पाइलिंग भी है. I'll show you some pictures. Shal walla, first of all, along the bank, walla piles are driven into the bed, and in feeder canal we observe before and after the certain bridges or siphons, beds cover occurs. Not on all lengths. Beds cover. Our bank slips occur at different positions. But they are historically, probably due to certain soil conditions or something else, bank slips occur all different places. Shalwala piling is effective, very much effective there. सालवाला पाइल का पर्पस ये होता है कि स्लिप सर्कल क्लियर होता है ना. सालवाला पाइल उसको कट करता है. बस स्लिप सर्कल बनना भी चाहेगा तो वो लेयरिंग का काम करता है. स्लिप सर्कल को स्लिप नहीं होने देता है. और नंबर 2 ये कि सालवाला पाइल है इसको हम कुछ हाफ पल्ला कट करके कंट्री साइड में ड्राइव करके उसको वायर से बांध देते हैं ताकि ये जो फ्यूचर में हम जो बैग डालेंगे इसके ऊपर उसका जो लोड आएगा उसका लोड केवल इस बैग में न जाए एंकर के थ्रू इसमें जाए. रिटेनिंग वॉल टाइप होता है. रिटेनिंग वॉल टाइप काम करता है. वो लेयर डालते हैं साल बनना कि उसके नीचे बैग डालते हैं. I observe is some used a lot of वो तो जो उनका इम्प्लीमेंटेशन साइड में जो है वो आइडेंटिफाई करता है. दूसरी टीम जो होती है अगर वो क्वालिटी राइट डायमीटर लेंथ का नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देती है. और हुआ ऐसा
हमारे यहाँ पे गणेश एक्चुअली कोई कोई लॉट रिजेक्ट कर दिया। हाँ, साल के बदले हमारे या कोई और सस्ता खरीद ले। हाँ, वो तो है ही। Not only that, the dia has to be also be of the डाया में डाया तो नहीं था हम तो कोई भी देख लेगा, बट वो जो साल है नहीं नहीं, डाया क्या होता है, डाया भी पूरा लेंथ का वही डाया नहीं मिलता है। हो सकता है वो डाया दिखा दिया इतना लेंथ का, और छोटा डाया का ही है मैक्सिमम लेंथ का, वो भी होता है। साली है वो। हाँ, वो तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और एक्चुअली साल इज नाउ ऑब्टेन फ्रॉम आवर मेनली मेदिनीपुर साइड। वो मेदिनीपुर उधर से ही आता है, वो लोकली शाल अवेलेबल नहीं है। There are certain photos. These are the pitching or downstream side. इंस्पेक्शन रोड जो हम लोग का जो फीडर कैनल का इंस्पेक्शन रोड, तो सर लोग ये ऐसा वही जो कल्वर्ट्स जो है, फॉर ईच हाफ आर्टली देयर आर कल्वर्ट्स, और कल्वर्ट का ऐसा ड्रेन बना दिया जैसे वो फिर वो जो पानी निकलता है वो पानी से फिर वो क्या होता है, वो और भी इरोशन होता है। ड्रेन का टाइप हाँ, इसलिए वो ड्रेनेज को मिला के करा। सब फोटोज में एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग? आप शेयर करना चाहें कुछ ऐसा क्या हमें प्रैक्टिस है जो हम लोग कर रहे हैं? अभी तो सर ये वायर के साथ सजेस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग तो यहाँ पे पीवीसी कोट वाला पीवीसी कोट 6.7 वाला यूज करते हैं, उसका प्राइस ज्यादा होता है। नॉट लेस देन 150 बोल्डर से कुछ बोल्डर मिल जाते हैं आपको यहाँ आसानी से। बोल्डर हमारे यहाँ पे है और हमारे यहाँ बोल्डर का शॉर्टेज है। हाँ, हाँ, हमारे यहाँ बोल्डर का बोल्डर का माइनिंग हम लोग का उधर बंद हो गया। नहीं, वो जो वायर का लगाया है उससे बोलो कोई क्या बोलता है जीआर का आसपास थोड़ा इंटीरियर की वजह से चलते हैं। तो हमारा जो डेटा जो बॉक्स साइज होता है 2x1 में सेंटी का एक एक बॉक्स बना के लोगों I would suggest if you certain if you give us share your technology with FBP, and as for the persons who are working in Majuli, they were saying, sir, the tying of 2 to 3 porcupines, they have implemented that successfully, but we have not done that. If we can share get that feedback from there, that will be helpful to us. जैसे करके आप लोग मल्टीपल कॉल को नहीं ऐसे अभी क्या होता है एक बोर्ड पे वीडियो में तीन प्रोफाइल एक साथ गिराते हैं, तो तीनों को अच्छा, ऐसा टाइप ना? अच्छा, ऐसा टाइप एक साथ। अच्छा अच्छा, along the river 3 एक साथ। अच्छा अच्छा, तभी एक बार तो आप लोग का कुछ वीडियोस है ना, थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए, बाद में दीजिए, बाद में दीजिए। अच्छा अच्छा, all participants are requested to fill the feedback form. Technical also and that online Google form. सब कर दिए। टेस्ट भी और टाइम का quiz बहुत सारे गलत को टीचर बदल को प्लीज with the chat कुछ ही response मिले हैं ना, प्लीज all please feedback chat the क्योंकि फीडबैक तो अभी आपका यहाँ पे जस्ट शो होगा तो all have to like So, have you ever tried with this sand film geobanks to arrest the erosion, bank erosion? we have used in only one. I couldn't get those photos within this short time. We have used in APP in feeder canal near the head regulator only in 2022 23 में, तो just only one project we have done. But that was also done in I should say on barge, mounted barge.
effective results have been received. Since Sir has said that border availability is very much Yes, limited right yes, now. yes. So you can also go for that sandfield projects. That is the possibility, and we have to go for alternative arrangements because boulder will not be available. Because mining has stopped due to environmental concerns and also due to various persons who were used in manual mining. They are getting certain respiratory diseases. So Jharkhand government has stopped. He will so sir, he was actively involved in the Majuli. He will show some of the videos. वन क्वेश्चन सर वो जो सर हम लोग कर्जा में जो यूज कर रहे हैं कहाँ है उसको हम लोग यूज कर अभी इसका काम तो नहीं है, ये तो लग आउट है, टच से कर सकते सर, टच डायरेक्ट होगा, एंटर 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 डायरेक्टली बोल्डर हम यूज करेंगे जो भाई एंटर सेंसर थोड़ा खराब है ना इसका, जियो से डैमेज हो सकता है पहले जियो से होता है फिर वो आपका मैट होता है फिर आप बोल्डर डालते हैं ओ अभी नहीं नहीं इसका का जो प्रोजेक्ट है वो ट्राई कर जैसे तीनों को एक साथ ट्राई कर हाँ वो लोकेशन पे जाएंगे वहाँ हो गया, आ तीनों बंदे में रहते हैं और फिर एक साथ जोड़ नहीं इस नहीं तो इसको आप आपस में बांधते हो आपस में डायरेक्ट तक नहीं बांधते नहीं चला 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 कहाँ सिग्नल दिला, हाँ सिग्नल दिला पहला Live